Hello, everybody. Good morning and welcome back. Today, we are going to talk about Oliver Goldsmith and his very famous work, which is She Stoops to Conquer. Oliver Goldsmith um, was one of the 18th century's most eccentric, frustrating, and ultimately beloved literary figure. A man who was famously good at everything on paper and bad at everything in person. ऐसे थे वो. इनकी लाइफ पूरी रोलर कोस्टर की तरह है of failed careers, gambling debt and literary genius. So he was born in 1728, likely in Palace, Ireland, and he was the son of a poor vicar. ठीक है, एक कंट्री विकर थे. अम, इनका जो चाइल्डहुड था ना, इट वाज मार्क्ड बाय अ सिवियर केस ऑफ स्मॉल पॉक्स, बहुत सिवियर, एंड दैट लेफ्ट हिज फेस परमानेंटली स्कार्ड, अ फैक्ट दैट कंट्रीब्यूटेड टू हिज लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटी. ऐसा होता है when you look at yourself, you don't like something which you see, you feel inferior and you feel bad, and it gives you that trauma, insecurity and awkwardness in social settings. इनका जो academic career था, it was to put it mildly, undistinguished. Trinity College, Dublin. He was a sizer, a student, who received free tuition in exchange for performing menial tasks. कि ठीक है, छोटे मोटे आप काम सारे करोगे, आपको मिल जाएगा. He was known more for getting into trouble and playing the flute than for his grades. And after graduating, he tried his hand at being a clergyman. वहां से भी rejected for wearing scarlet breeches to his interview. फिर एक lawyer. He gambled away his tuition money also in London. And finally a doctor. ये career hunt इनका चल रहा था. 1755 में Goldsmith set out on a grand tour of Europe and virtually no money. Legend has it he supported himself by playing the flute. फूड के लिए, लॉजिंग के लिए विलेजेस में अक्रॉस फ्रांस, मतलब निकल गए across France, Switzerland, and Italy. So while he claimed to have entered a medical degree in Padua, historians remain skeptical. कि यार पता नहीं मिली थी कि नहीं मिली थी. So Goldsmith eventually settled in London in 1756. After failing as a physician, as a school teacher, he turned to hack writing, पैसों के लिए लिखना, churning out reviews and essays for magazines to stay ahead of his creditors. His breakthrough came when he joined the club, an elite intellectual circle including Samuel Johnson, Edmund Burke, Joshua Reynolds. ये सब थे उसमें. Despite his genius, his friends often teased him for his clumsy से थे थोड़े. Horace Walpole famously called him an inspired idiot. And David Garrick wrote this cheeky epitaph also for him while he was still alive. Here lies Nolly Goldsmith, for shortness called Noll, who wrote like an angel but talked like poor Paul. ठीक है? Despite his chaotic personal life, he produced masterpieces. The Deserted Village, poetry में, The Vicar of Wakefield, novel में, She Stoops to Conquer, drama. So Goldsmith earned significant sums from his writing, but his addiction to gambling and his legendary generosity, बहुत generous भी थे, it kept him in state of constant financial ruin. He would often give his last guinea to a beggar, while being hunted by debt collectors himself. तो ऐसे थे. He died at the age of 45, 1774, due to a kidney infection exacerbated by his insistence on self treating कि मैं खुद ही कर लूंगा ठीक, मैं तो डॉक्टर हूँ. एक popular quack medicine के साथ called James's powder. So when he died, he was over 2,000 pounds in debt, a massive sum for the time. Samuel Johnson, his greatest champion, remarked, was ever poet so trusted before. तो ये थे Goldsmith. Let us see. This was him.
All side poses, huh? The professional underdog, an Anglo-Irish writer, chaotic mix of academic failure, wandering poverty, eventual literary superstar. ऑगस्टन एज के लेंस से आप देख सकते हो इनको, उसी टाइम में ये हैं भी. Perpetual outside, unique position. So struggle, jack of all trades, master of none type, but then master of literary genius. Grand tour on foot, Fig Grub Street, hack writing. Arriving in London, he became a hack writer for monthly reviews. फिर ब्रेक थ्रू आया द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के साथ विच वॉज अ सीरीज ऑफ लेटर्स रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ फिक्शनल चाइनीज ट्रैवलर लियन ची एल्टांगी प्लीज रिमेंबर कॉमेंटिंग ऑन इंग्लिश सोसाइटी. फिर एक और लेंस है दिस वॉज an advanced satirical technique, defamiliarization, used to critique the absurdities of British culture, fashion, and politics. Club, the club, जिसमें ये सब थे. James Boswell famously described him as someone who wrote like an angel but talked like a poor Paul. Johnsonian rescue. जॉनसन एक बार बचाया था गोल्डस्मिथ को फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड फॉर डेट बाय taking the manuscript of the Vicar of the Wakefield and selling it to a publisher for £60. Master of the three genres. ये देखो the novel, poetry, drama सब लिखा है इन्होंने. So he died at the age of 45. अपने आप ही पाउडर ले रहे थे. Was ever poet so trusted. Let's talk about She Stoops to Conquer, okay? 5-act comedy hai, comedy of manners, that revives laughing comedy against the sentimental drama which was popular in the 18th century. The plot revolves around misunderstanding, disguise, वही मतलब you know misunderstanding होगी, identity का ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर ultimately everything falls to place. Class assumptions and courtship. Scene 1 at Mr. Hardcastle's house. So the play opens in the country home of Mr. Hardcastle. Mrs. Hardcastle complains that her husband prefers old fashioned manners and rural simplicity. तो जी मिस्टर हार्ड कासल की कंप्लेन है कि वो बड़े पुराने किस्म के इंसान हैं, उनको सिंप्लिसिटी चाहिए. मिस्टर हार्ड कासल मॉक्स लंडन फैशन. ये क्या आजकल फटे हुए कपड़े मतलब आई एम जस्ट सेइंग जब नया नया फैशन आया था फटे हुए कपड़ों को तो पीपल यूज टू मॉक इट ना. फटी हुई जीन्स. We learn that Hardcastle's daughter, Kate Hardcastle, is to receive a visitor, Charles Marlowe, son of Hardcastle's old friend Sir Charles Marlowe. केट के पास एक लड़का आने वाला है. The visitor is arranged to consider a possible marriage between Kate and Marlowe. So Mrs. Hardcastle wants her son, Tony Lumpkin, from her first marriage to marry his cousin Constance Nelville, who is under her guardianship. तो मिसेस हार्डकासल की गार्डियनशिप में एक लड़की है कॉन्स्टेंस, उसकी कजन. अब टोनी लम्पकिन उसकी फर्स्ट मैरिज से है. हाउएवर कॉन्स्टेंस हाउएवर लव्स हेस्टिंग्स, मार्लोज फ्रेंड. ठीक है, तो ये दो रोमांटिक प्लॉट्स आर एस्टैब्लिश्ड, मार्लो और केट का और हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस का. फिर सीन 2 होता है एट द थ्री पिजन्स एल हाउस. वहाँ पे टोनी लम्पकिन, मिसेस हार्डकासल्स मिस्टीवियस सन, इज ड्रिंकिंग विद कुछ लोकल्स के साथ बैठ के. मार्लो और हेस्टिंग्स आते हैं. मार्लो और हेस्टिंग्स साथ में आ रहे हैं. हैविंग लॉस्ट देयर, भूल गए हैं, जा तो उसके घर रहे हैं हार्डकासल के, लेकिन रास्ता भूल गए. टोनी उनको पहचान लेता है और कहता है मैं थोड़ा मजे करता हूँ, थोड़ा मजाक मस्ती हो जाए इनके साथ. सो ही टेल्स देम दैट हार्डकासल्स हाउस इज एन इन. उनका घर उनको तो इन है एक, तो वो लोग मान जाते हैं. दिस डिसेप्शन ड्राइव्स द मेन कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले. फिर एक्ट 2 में हार्डकासल के घर में, जिसको वो इन समझ रहे हैं, मार्लो एंड हेस्टिंग्स अराइव एट हार्डकासल्स होम बिलीविंग इट टू बी एन इन. सो दे बिहेव फ्रीली और डिसरिस्पेक्टफुली.
मार्लो ऑर्डर्स हार्ड कासल अराउंड एज इफ वो एक इन कीपर हो। तो हार्ड कासल मतलब कंफ्यूज सा हो जाता है और ऑफेंड हो जाता है, लेकिन अभी ही इज ट्राइंग टू रिमेन हॉस्पिटेबल। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग और डीपन हो जाती है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट मार्लोज कैरेक्टर, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी फ्लर्टिशियस विद लोअर क्लास women, बट एक्सट्रीमली शाई एंड ऑकवर्ड विद women ऑफ हिज ओन रैंक। जो उसी की क्लास की या उससे अपर क्लास की women है, उनसे वो बात नहीं कर पाता, लेकिन उसकी लोअर क्लास की women से वो आराम से बात कर लेता है। Kate learns from her father about Marlowe's strange behavior. तो she discovers Marlowe बड़ा ही bashful है with ladies of quality, bold with barmaids and lower class women. तो अब केट प्लान बनाती है, शी विल स्टूप क्या होता है, झुक जाना। शी विल डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ barmaid to test and to win him. So this is the central thematic move of the play. So she stoops socially in order to conquer emotionally. So Kate appears to Marlowe dressed simply, pretending to be a barmaid. Marlowe immediately becomes confident and charming, flirt करता है उसके साथ. Kate skillfully encourages him to make to why, him while maintaining moral control. और दूसरी तरफ हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस प्लान बना रहे कि अब हम भाग जाएंगे, लेकिन उनको कॉन्स्टेंस की ज्यूल्स चाहिए जो मिसेस हार्ड कासल के पास हैं, क्योंकि वो उसकी गार्डियन है, शादी पे उसको मिलेंगे। तभी तो वो चाहती है उसकी बेटे के साथ शादी हो जाए उसकी। Now, Mrs. Hardcastle believes the jewels are safe with Hardcastle. However, Hardcastle had earlier given them to Hastings for safekeeping, believing they belonged to Constance. So, this creates confusion and delays the elopement plan. मिसेस हार्डकासल इज अनअवेयर कि जूल्स जो हैं वो वहाँ है ही नहीं जहाँ उसको लगता है। टोनी को सच पता है, लेकिन वो बड़ा एंजॉय कर रहा है सारा कंफ्यूजन। मिसेस हार्डकासल प्लान्स टू टेक कॉन्स्टेंस टू लंदन टू प्रिवेंट हर एलोपमेंट। टोनी अभी भी मिस्चीवियस कुछ ना कुछ कर रहा है, सो ही ट्रिक्स हिज मदर इनटू थिंकिंग दे आर ट्रैवलिंग फार, एक्चुअली ड्राइव्स हर इन सर्कल्स. She believes they are lost on dangerous moors. This physical comedy parallels the emotional confusion of other characters. Kate continues her disguised interaction with Marlowe. Marlowe begins to express genuine affection now. He confesses vulnerability, his arrogance fades, and Kate sees that beneath his awkwardness lies sincerity. अब स्टेज पे कॉमिक डिस्गाइज बिकम्स मीन्स ऑफ इमोशनल रेवलेशन. उसके बाद कंफ्यूजन अबाउट द हाउस बीइंग एन इन इज फाइनली रिवील्ड. हार्ड कासल अब दुखी होके मार्लो के पास चला जाता है. मार्लो इज एम्बैरेस्ड टू लर्न ही हैज इंसल्टेड हिज होस्ट. सर चार्ल्स मार्लो आ जाते हैं, उसके फादर. द ट्रूथ अबाउट केट्स आइडेंटिटी इज ऑल्सो ग्रेजुअली डिस्क्लोज्ड. Kate reveals herself as the same woman Marlowe courted in disguise. Marlowe realizes he loves her genuinely, overcomes his class based inhibitions, accepts her as his bride. Meanwhile, it is revealed that Tony is actually of age. मतलब 18 से बड़ा है. Since he refuses to marry Constance, she is free. So Hastings and Constance can now marry. Mrs. Hardcastle's scheme collapse. And the play ends with two marriages, misunderstandings cleared, social harmony restored. ठीक. She stoops to conquer. It has also been adapted for films on numerous occasions. Ask me no questions and I'll tell you no lies. Very common phrase है इस प्ले में. Ask me no questions और मैं झूठ बोलूंगी ही नहीं. It was originally titled Mistakes of a Night. Please remember. गोल्डस्मिथ का फाइनेस्ट अचीवमेंट क्रिटिक्स ने कहा था. यहाँ पे भी अच्छा एक समरी है, आप यहाँ से भी दोबारा से पढ़ सकते हो. अच्छा लिखा हुआ है सारा.
इन बेटर डिटेल्स ऑल्सो। ठीक है। कैरेक्टर्स, रिसेप्शन। बॉसवेल ने कहा, आई नो ऑफ नो कॉमेडी मेनी ईयर्स दैट हैज सो मच exhilarated an audience that it has answered so much the great end of comedy, making an audience. It's actually true. बहुत सारी कॉमेडीज हैं, हम लोग रेस्टोरेशन कॉमेडी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑगस्टन एज में तो चलो नहीं है उतना, लेकिन बहुत अच्छा ये एक प्ले गोल्डस्मिथ ने लिखा हुआ है, ये अडेप्टेशंस हैं। दैट्स इट। गो डिटेल्स, एकदम डिटेल में नहीं भी जाना होगा तो एटलीस्ट एक और बार इसका समरी कर लीजिएगा तो क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।